Good evening, friends. Welcome to my channel EduTech Law. Please subscribe to the channel and press the like button. Today we'll be seeing what is the margin scheme in GST. Normally, GST is charged on the transaction value of goods, but in respect of second-hand goods, the value on which the GST is charged is the margin between the sale price and the purchase price. So if the margin is negative, then there is no GST. For example, if I have purchased a second-hand car for 10,000 rupees and I am selling the same for 50,000 rupees, so I have to pay GST only on rupees 40,000. And for example, if I am purchasing the car in 50,000 rupees and I am selling it for 40,000, so my margin is negative 10,000. So I need not pay GST on that. So that is the margin scheme. Now we'll see at the valuation of second-hand goods, how it is valued. As per Rule 32(5) of the CGST Rules 2017, where a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second-hand goods, that is, used goods as such or after such minor processing, which does not change the nature of the goods, and where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods. The value of supply shall be difference between the selling price and the purchase price. Where the value of such supply is negative, it shall be ignored. So what we have told is the same, like it is only the difference between the purchase price and the sale price on which we will be paying GST. If that is negative, then no GST. And if minor processing is done on the goods purchased, such cost will also be added to the purchase price and reduced from the selling price. So on the remaining price, only the GST margin money, only the GST is paid. So if the margin money is in negative, then no GST. The provision to the above rule further provides that in case of purchase value of goods repossessed from an unregistered defaulting borrower for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by 5 percentage points for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession. For example, if I have taken a car on loan from the bank and I am unable to repay the amount, so the bank takes the car, and if he sells the car again, if the bank plans to resell the car, so bank has to reduce 5% for every quarter from the purchase price and then see the margin money. Like during the time of sale, what is the purchase price reduced by 5% every quarter, and then what is the sale price. So on the margin money only the bank is charged GST and not on the full sale price. So margin money पे GST स्कीम, मार्जिन स्कीम इन GST. अगर हम गुड्स रीसेल करते हैं, गुड्स जैसे हम अनरजिस्टर्ड डीलर्स या कोई हाउस होल्ड पर्सन से गुड्स खरीदते हैं एंड उसको थोड़ा उस पर प्रोसेस करके फिर बेचते हैं, ओरिजिनल गुड्स का ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वैसे ही होना चाहिए. थोड़ा उसको मॉडिफाई करके या थोड़ा उसको सुधार करके हम अगर बेचते हैं तो जो सेल प्राइस है और जो हमारा परचेज प्राइस है उस पे डिफरेंस पे ही हम GST पे करेंगे. अगर हमारा सेल प्राइस परचेज प्राइस से कम है तो हमें GST पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इस पे एक प्रोविजन है, अगर कोई बैंक से एसेट परचेज करने में लोन लेता है, कोई बोरोवर लोन लेता है बैंक से या किसी से भी, एंड अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो जो लेंडर रहता है
वो जब से रीसेल करता है प्रोडक्ट का, गुड्स का, तो उसे परचेज प्राइस से एवरी क्वार्टर 5% उसे रिड्यूस करना है, तब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। जिस तब वो प्रोडक्ट सेल होता है वो टाइम पे उसको परचेज प्राइस रिड्यूस की हुई हर क्वार्टर 5% से वो प्राइस लेनी होगी और सेल प्राइस से रिड्यूस करना होगा। अगर मार्जिन उसकी पॉजिटिव में है तो वही मार्जिन पे वो परचेज ये जीएसटी पे करेगा। अगर वो अगर वो मार्जिन नेगेटिव है देन वो जीएसटी नहीं पे करेगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड like button. Thank you.